Hi, welcome to my vlog. So today is Friday and I just finished my classes and everything. Whenever I know it's the weekend calling, so I just get so excited because मुझे पूरे हफ्ते में ज़्यादा time तो मिलता नहीं है. So this is the only time I feel like yes, I can do some productivity. I can do like anything I actually want. And also Saturday, Sunday, though I do some weekend special classes, but this week I'm like completely free. All of my clients are on their vacation, so I thought just to take a nice vacation for myself as well. Of course not kind of a vacation I can say, but yes, I'm just planning कल मैं निकल जाऊँ और मैं बस कहीं पे जाके कुछ दिन रह जाऊँ, and I think that would be the best part what I actually can do for myself. Place actually I'm going, मैं वहाँ पे जाके बहुत सारा काम करूँगी. I do have to record my video, I have to do my content shoots as well. तो मैं इससे vacation से ज़्यादा workation I think ज़्यादा बेहतर रहेगा. मतलब मैं वर्क मोड में ही रहूँगी बट अपने इस घिसी पिटी जगह से थोड़ा सा दूर एंड थोड़ा सा पहाड़ों में. So yeah, I'm just going to take you with me and I'm going to document everything that I'm just going to do in this trip. First thing what I'm just go ahead with just cleaning my kitchen and making the dinner, finishing up with the dinner, and then I have to do a lot of like packings as well. So yeah, let's go ahead with that. Good morning everyone. So I did few things yesterday. I couldn't even document all those things. के बाद यहाँ पे आके I do feel a lot of like exhaustion on everything. That's why here I just kept everything ready. So whenever I come, I feel like everything is still same way. And now it's 5:52. I'm going to get ready and all the stuffs, packing and all the necessary things for my cocoa as well. I'm just going to organize everything and yeah, let's get started. Now quickly I'm going to wash my face and I will quickly take my bath because I have to go out as well. मैंने सारी चीज़ें पैकिंग इसीलिए नहीं की थी because few of the stuffs I needed in the morning right now. तो इसीलिए मुझे लगा कि मैं सारी चीज़ें एक बार में यूज़ हो जाएगा and then I'm just going to pack it together. So I don't have much hustle कि मैं फिर से पैक कर लूँ and then again I have to bring that out to use it again and again. I think that's a smart move. This face wash is actually very good. My skin is like little sensitive. I really can't even use very harsh product on my skin, but this one is really good one. That AHA Glow Gentle Skin Cleanser. Yes. This is what actually we can see, like the subtle glow just after using one time. So let's start with me now. Now me and my cocoa is completely ready to go. Baba, you happy? So now I'm going out. I'm so excited to go. It's too hot here and I really hate this kind of summer where all day I just have to sweat. Hopefully where I'm going, I'm just hoping that there at least the weather is good. Either it will be so hectic for me. So I finally arrived in the place. The room is so good, so nice. But this room has 2 beds, which is unnecessary. But it's okay. I really love this smaller one. अभी इसका बाहर वाला व्यू दिखाती हूँ. Wait. Finally I'm into the place. रास्ता बहुत ख़राब था, बहुत बेकार था. It was little difficult to come with Coco, but जब मैं यहाँ पे पहुँचा and the view and the place, now I can feel the journey was worth it, completely worth it. अभी lunch का time तो हो चुका है, but still they have offered me tea, biscuit and something else, some snacks. So yeah, this is wow, the design of the cup. See, they really can offer good tea. चाय बहुत अच्छी है. Now after having my tea, I'm just going to do some editing and after that maybe I will go for a walk. The weather is pretty good, at least from Siliguri. वहाँ पे और रास्ते में इतना ज़्यादा गर्मी था, but यहाँ पे comparatively बहुत कम है.
ये वहाँ से जितना साइड दिख रहा है वो कम्प्लीटली भूटान है एंड वेयर आई एम राइट नाउ दैट्स इंडिया। और नीचे से जाके व्हेन आई वाज एक्चुअली कमिंग हियर इन दिस प्लेस तब नीचे एक रिवर था जो वो रिवर इंडिया और भूटान का बॉर्डर है। दैट वाज रियली अमेजिंग बट आई कुडंट इवन टेक एनी शॉट आउट देयर बिकॉज रास्ता बहुत खराब था एंड टेकिंग आउट द फोन और एनी काइंड ऑफ डिवाइस वाज सो डिफिकल्ट फॉर मी। कितना साफ सुथरा है। See, this is the view. This is the lunch place. अभी तो थोड़ा थोड़ा बारिश भी होना शुरू हो गया है तो see, oh my god, see the view, how beautiful it looks. लोगों का किचन है एंड यहाँ पे डाइनिंग है और ये ब्यूटीफुल प्लेस सराउंडेड बाय हिल्स। इट्स अ परफेक्ट वीकेंड लाइक। मैं यहाँ पे रह रही हूँ दिस अपवर्ड वन। कम, आई विल जस्ट गो अहेड विद दिस। See the back view, oh my god। मतलब आने के टाइम पे रास्ता इतना खराब था और यहाँ पे आने के बाद जो मैं व्यू देखी और जहाँ पे मैं रह रही हूँ द प्लेस इज सो गुड एंड दैट्स व्हाई मतलब आने के टाइम पे मुझे जितना भी ट्रबल हुआ मैं सब भूल गई। इतना अच्छा लग रहा है, परफेक्ट वीकेंड वाइब लग रहा है मुझे और वो भी बहुत दिन बाद। एक्चुअली इतना गर्मी है इन सिलीगुड़ी इवन टू द प्लेसेस अराउंड हियर, तो उससे तो ये वाला जगह बहुत शांति है। वेदर भी थोड़ा अच्छा है यहाँ पे। जब हम लोगों ने लंच किया द लंच के टाइम पे सब कुछ ऑर्गेनिक था, मतलब सब कुछ यहीं पे बना हुआ। जो वेजिटेबल हम लोगों ने खाया वो फार्म से उठा के तभी के तभी लेके गया एंड आई वाज जस्ट वॉचिंग दैट फ्रॉम बैल्कनी की ये तो लेके गया है और उसी को बना के दिया है। इतना फ्रेश खाना है। सो इफ यू आर ऑल्सो प्लानिंग टू विजिट सम प्लेसेस लाइक दिस, मैं इस जगह का पूरा डिटेल्स एंड एवरीथिंग कल सुबह अच्छे से दिखा दूंगी एंड ऑल्सो एड्रेस एंड लोकेशन एवरीथिंग आई विल शेयर। सो या इफ यू आर ऑल्सो प्लानिंग टू विजिट सम प्लेसेस like this, please do come and trust me, you will not regret at all. So I actually came here just to visit the sightseeing and everything. Trust me, the place is so good. Yeah, I'm just going to show you something and I'm going to share a story with you which is very very interesting. Can you see the stones which is red in color? ये जो लाल लाल जो दिख रहा है ना पत्थर यहाँ पे, स्पेशली द रेड वंस ओनली। इस नदी को ना यहाँ पे बोलता है दवाई खोला। दवाई मतलब वो मेडिसिन जो होता है। It happens here especially in December and January. यहाँ पे people who are actually suffering from arthritis, ऊंट से एक टब जैसा बनाया जाता है, लाइक बहुत बड़ा बथ टब जैसा। उसके बाद वहाँ पे नदी का पानी रख के फिर जो रेड कलर का वो जो स्टोन से उसको आग में अच्छे से पका के फिर उसमें डाला जाता है पानी में, और वो पत्थर की जो गर्मी होती है उससे वो पानी गर्म होना चाहिए और वहाँ पे लोग जाके यहाँ तक पानी करके वहाँ पे बैठ जाते हैं, डूब के रहते हैं। एंड दिस प्रोसेस एक्चुअली हेल्प्स देम अ लॉट दैट आई गॉट टू नो। आई नेवर एक्सपीरियंस दैट, बट यहाँ पे लोग बहुत सारे आते हैं और मैंने जितने भी लोकल से यहाँ पे पूछे, एवरीवन आर आंसरिंग द सेम थिंग एंड दे सेड कि इवन मेरे जो वो वाले हैं मैं जिसके होम स्टे में आई हूँ वो वाले भैया, तो उनके मदर का भी सेम आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है एंड शी यूज टू कम हियर एवरी ईयर। तो वो 2 महीने बहुत अच्छे से इसी तरह से प्रैक्टिस करते हैं एंड दैट रियली हेल्प्स अ लॉट। सो इफ एनीवन वांट्स टू कम हियर एंड एक्सपीरियंस दिस थिंग,
So, and also if you are planning to visit in especially January or December, of course you do visit this place as well. This is मेरा जो homestay है वहाँ से this place it took just 7 minutes I feel. So it's like very close. So make sure if you are visiting this one, so you experience this as well. And if you know someone, it actually can help. So yeah, recommend someone who actually needs it. Good morning, everyone, from the place Tode. The morning is so blissful, complete silence. This is exactly what I wanted. Actually, love to start my morning with. It's completely like that. मुझे सुबह सुबह चाय और बिस्किट आके दे के गए आंटी। मैं बहुत सारे होम स्टे में पहले भी रही हूँ। मैंने देखा है लाइक 8-9 बजे के बाद ही जाके ब्रेकफास्ट मिलता है और चाय शायद उसके थोड़ी देर पहले या उसके साथ। बट यहाँ पे द मोमेंट आंटी वोक अप एंड शी सॉ कि मेरा भी दरवाजा खुल गया है, तो मुझे गुड मॉर्निंग बोल के आके अच्छे से चाय बिस्किट सब दे के गए हैं। देयर बिहेवियर आर सो ब्यूटिफुल ऑनेस्टली। साथ में मुझे रात में भी बोल के दिया है द किचन इज ऑलवेज open, you can come whatever you want to eat or if you want to make something you can do as well. मुझे कहीं पे भी ऐसा बोला नहीं गया था. So this gesture was really good. Now I'm going to freshen up. Now I'm going to get ready for the day and I will be just exploring the sites. थोड़ा सा टहल के आऊँगी अभी. और यहाँ से अभी द कॉर्न वो भुट्टा लिया जा रहा है और इस भुट्टे को ही फिर हम लोग खाएंगे. वाओ, इट्स लाइक सो गुड. हाउ ब्यूटीफुल इट इज कि यहाँ पे सब कुछ है और यही से लेके एंड यू नो एवरीथिंग इज सर्विंग हियर फ्रेश एंड नेचुरल. इट्स सो गुड टू फील. Now I got ready for my breakfast and then I will just go for hopping sightseeing and yeah, I will be just visiting the local market now. और आसपास में मुझे बस थोड़ा सा घूम के देखना है. Okay, my coco is also ready. बाहर जाने के लिए तब से बाहर जाने के लिए तब से Now I'm getting ready. My coco is also with me. Jaba. चलो, now let's go ahead. तो ऐसे ही मैं बस थोड़ा सा साइड सीन सब घूमने आई हूँ, देखने आई हूँ. एंड हेयर आई फाउंड अ ब्यूटीफुल कैफे. लेट मी जस्ट शो यू सिंपली. And this is the cafe. It's so beautiful. That's surrounded by a whole huge stone which is covering it, and that's the whole point. It's like the sound of the waterfall which is so heart-taking. Can you see the view? वो जो वहाँ पे वो रिवर दिख रहा है, that is the border. वो जो पहाड़ है वो है भूटान. And where I'm standing right now, it is the India. How I actually can describe the beauty of this place in words. The words are getting like so tiny for me just to describe this place. It's so good, so peaceful, and the only sound I can hear from this place is the sound of the river and some chirping of the birds, and that's it. No sound, nothing else. So peaceful. Say hi.
So it's raining outside and I was just chilling out inside the room. I was doing some editing और रात का खाना आ चुका है and in dinner I'm going to take momos, homemade momos यहाँ के. Good morning, happy Monday everyone. I hope you all get a very kick start to your week, and this is the third day I'm spending in the same place where I actually came, and now I'm just going to freshen up quickly and I will be just taking all my classes from here as well. And yeah, still I don't have any plan to go back, so I'm just going to do all the classes from here and all my works. Let's see when I actually can fix my mind to go. Maybe tomorrow I'll be leaving this place. So yeah, until then I'm going to enjoy it again so that I can take all the good memories along with me. Today it is the last day. I'm staying here and I will be leaving within a few hours. I have taken all my morning classes from here. मेरा मन ही नहीं है यहाँ से जाने का because the place, the people around here, they are so good. And ऐसा situation है ना, जैसे मैं घर पे अगर मैं classes लेती थी, whenever I'm just working, maybe in between I just get exhausted. But here it's like so different, you know. The moment I just take my eyes out of my window or out of my door, there is a beautiful view of the mountain, the clouds and everything. It just made me feel so good and relaxed at the same time. And सच में मुझे बिल्कुल ही मन नहीं है यहाँ से जाने का, but I have to leave. It's raining so much outside, but I have to go there because I have some meeting and other things. But yes, the memories I'm going to take with myself from here is so beautiful, it's so calming, and I would love to visit this place again. And sometimes I feel this kind of, you know, getaway is very important. Maybe with your work or maybe without your work. And I am someone who actually love working a lot, so I took my works and I just came here because if I don't work I feel so much of bored, so I really don't even wanted to go to that zone, so I just took up all my classes and works along with me. Yeah, it was so amazing workation instead of vacation, I must say. So if you also someone who actually wants to visit this place, go for it, must visit this place. And honestly, the honest and genuine review, this is not a paid promotion of this particular homestay because I don't do that so much, but this place and the people, especially the people, they're so good. Like the foods, very simple and authentic foods, and everything is organic. सब कुछ farm से ही से लेके बना के मुझे हमेशा दिया जा रहा है. Even normally in homestay what we actually get, like 3 times meal included and 2 times of tea and snacks, right? But here I'm getting like maybe 3 to 5 times of tea in a day. Everything is like so homely and I felt so good here. It was much needed, I feel. So if you really want the location, then don't forget to comment and I will send you all the location details as well. Thank you so much for being here till the end. Don't forget to subscribe my channel so that you can get the next workation again with me. And if you also have any suggestion of the places, do comment me. I'm planning my next workation soon.